आप लोग इधर भी बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो, और यहाँ पे कितना लोग आ सकते हो। So let's gather. I will not make any kind of motivational speech because I'm already late by at least 1 hour, and there is a characteristic of being VIP. Come late. If you come in time, then you are an ordinary person, and the amount of delay is proportional to your status. So let's start with some experiment status. All of you have papers, right? In your notebook, you have it. All right. So step number 1, you have a piece of paper of approximately this size. Everyone, do it. You will enjoy. जितना लाइट है वो करना है. जितना लाइट है वो करना है. No presentation, no video. नहीं. Next is, you have your pen or pencil. Make a hole in this piece of paper, using a pencil. Don't make big holes. Just the tip of your pen. You should go into it, and that's it. So make a small hole in the paper. Now put the paper and the pen aside and have some written page where something is written in small letters, so which you can just you can read. Right. So anything written by you or printed or anything in usual size letters, okay, just have that in your hand. A page written with your pen or printed, just have in your hands. Right? I don't see people doing it. Okay, that's very good. Now, take that printed or written page very close to your eyes, say 2 centimeters from the eye, very close, not this piece of paper, in which you have put the hole. Put that paper piece and your pencil aside and take in your hand some printed or written page on which something is written in some letters which you can read. Right? It can be your own notebook or it can be a book where something is written, any kind of thing which you can hold in hand and read. Okay? And then take that printed thing very close to your eyes, almost 2 to 3 centimeters. Can you read it? No. Are the letters visible? No. They are all very blurred, right? Yes. Now what you do is, you take this paper piece with hole, keep the printed or written page at the same distance, 2-3 centimeters. 2-3 centimeters. 2-3 centimeters like this, not like this. Like this. Okay? And make sure that light is falling on the printed page. So don't do it like this. Do it like this. The light will fall on your page. 2-3 centimeters. And then bring this hole, this paper piece with hole in between your eye and that printed thing. And see through the hole. See the letters through the hole. Are you able to read? Huh? Sir. Clearly you are still hazy.
So the light falling on it is put it this way so that light falls on this. And then read. It is because light is not falling. Alright? Are you able to read? He knows everything what is there. Centimeters from the eye, I was holding it. 2 centimeters from the eye, through this paper hole, he could read all the sentences, all the words, right? But if you don't use this paper and 2 centimeters, anything readable? No. Anything readable? No, absolutely no. Through the hole, you can. So what have you made? What have you made? Something which was not visible, you made it visible. And can you compare the letters that you saw and the letters which are there on the book? Did you see bigger letters or smaller letters of the same size? Bigger letters. So something which could not be seen by the eye, you are seeing it clearly, bigger in size. What have you made? Microscope. Alright? So all of you have made a microscope. Alright? So alright, very good. Let's start on something else. So name it, give it a good name. What kind of microscope you name it? What kind of suggest some name for your own microscope. We have traveling microscope, we have compound microscope, we have simple microscope, handy microscope, okay? One suggestion, handy microscope. Name your paper microscope. Good. Electron microscope. The researchers will not pursue. Do you know this experiment? Do you know this experiment? I have filled a glass tumbler with water and put a lid on it. What will I do now? Flip it. Okay. Flip it. And now what I will do? Will it fall? Let's hope so. Let's hope so. So I'm here. Why did it fall? People say that it will not fall. Okay, this is a very standard, age-old, centuries from for centuries it is there, and the textbooks all say that it will not fall, but it has fallen. Why did it fall? Why did it defy the textbook? I'm too excited. All right. So why did it fall?
What was different in the two cases? Huh? Volume? Volume of water. Oh, alright. Okay, good. Possible. So previously I took a lot of water in the tumbler, so the weight was more, so it fell down. And in the last case I took less amount of water, and therefore the weight was less, and it did not fall. It is a plausible looking explanation. I will not say at this moment that it is the correct explanation. But I congratulate you for thinking on the right lines. You have to think. Look at a phenomena, you have to think, find the reason of that phenomena, and guess for it, and then have some kind of a statement, yes, it is because of this. But then you have to verify, you have to validate. If you say that because of more amount of water it fell and less amount of water it did not, you should repeat it several times and see that every time does it happen with different amount of water, and then come out with your final conclusion. So your first step, that you could think an explanation which looks okay. Heavy है, गिर गया, कम है, नहीं गिरा. Looks good. So this is the right kind of thinking. So very good, very nice. Now I will not give you the answer. It's a very costly apparatus with which I did the experiment. No. The experiment which I did is very costly. You cannot do it. No? You need a bucket, you need some water, you need a glass, कांच का glass चाहिए आपको, then you need a ढक्कन, right? You need awning. And what kind of fridge is this? Today morning only I was looking in the house, what should I put on the glass tumbler, and finally I got one. क्या है ये? प्लास्टिक का कंटेनर का ढक्कन है, जो रखते ना दाल वाल चावल, ये प्लास्टिक कंटेनर इन द किचन, एंड देन यू हैव दैट लिड. तो वो मैंने खोल करके उठा करके ले आया, वो चीज अभी खुला हुआ है घर. So it is zero cost experiment. Number one, it is zero cost experiment. Number two, you don't have to go anywhere else. It's all there in your house. So you perform this experiment with different amounts of water, do it several times, and then validate whether the falling and not falling depends on the amount of water or it is not. If it is yes, good, you have done it. Right? If it is not, then you have to look for another plausible explanation. ठीक है? अगर आपको पक्का हो गया, आपने 20 बार 25 बार करके देख लिया, whenever you take full of water तो गिर जाता है, और आधा लेते हो, 1/4 लेते हो तो नहीं गिरता है. Do it several times, 20 times, 30 times, and validate. It's done, very good. But if you find no, it's random. Sometimes even full glass does not fall. Sometimes even less filled glass also the lid falls. Then you have to again start thinking what else. Okay? What else? Okay. Okay, fine. So let's move. What did I plan for you? क्या गिरा था इसके ऊपर? पानी. तेजपुर का यूनिवर्सिटी का पानी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमारे. हमसे भी ज्यादा तेज हो सकता है. हम जो सोच कर आए हैं शायद वो नहीं करेगा. अभी आप लोग को दिखेगा नहीं, शांत रहिएगा तो कुछ आवाज सुनाई पड़ेगी.
शायद if it works well. ओके, आप शांत रहिएगा तो आपको पूरा आवाज सुनाई पड़ सकता है. And keeping it here, and keeping it here. ओके, हम लोग का रुमाल हमेशा साथ में रहता है, कहीं निकालने का जरूरत नहीं है. ओके, गुड, थैंक यू. उनको मालूम था कि ये सब धंधा करने वाला है. I will just touch the two hands to the bottle, will not press it. ईमानदारी से कह रहा हूँ. टेबल पे हाथ रख करके कसम खाता है. मैं इसको टच करूंगा दोनों हाथ से. क्या हुआ? आवाज सुनाई पड़ा क्या? पड़ा ना? आपको पड़ा ना? कैसा आवाज था? टक टक. शांत रहोगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगा. ये है ना? तो मैंने प्रेस नहीं किया है, राइट? उसको कंफर्म करने के लिए मैंने प्रेस नहीं किया है. मैं अब ऐसे करूंगा. अब दोनों हाथ खोल करके पूरे प्यार से उसको पकड़ना दोनों साइड से. मैक्सिमम ऑफ योर हैंड शुड बी इन कॉन्टैक्ट. क्या हो गया ना? आपने प्रेस किया क्या? नो ना? हाँ. तो देखो क्या हुआ था, हम बता देते. मैंने ये ढक्कन को थोड़ा गीला करके I just put few drops here, or I just did it like this. I had some water in it. And I put the cap here, inverted. The flat part of the cap was put on this mouth of the bottle, and the screw part was in the sky, looking towards the sky. And then I only held it with my hand, as a puppet. So it jumps. Alright? ये अभी ऐसे नहीं गिर गया कि मेरा हाथ टेढ़ा हो गया. It jumped. उस समय थोड़ा जंप किया था, जब ज्यादा जंप कर गया तो नीचे गिर गया. So by holding it with the two palms, it jumps. Can you guess why? Vapor pressure. अच्छा, हाँ, वेपर प्रेशर. ये पानी है, तो पानी का वेपर है, वेपर के कारण से प्रेशर है. जो हवा था उसके कारण प्रेशर नहीं था क्या? जो इसमें हवा है उसका भी तो प्रेशर है. तो जो वेपर है इसमें, इस हवा में भी वेपर है ना? एयर कंटेन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर कंटेन्स क्या क्या होता है एयर में? नाइट्रोजन, हाउ मच? 78%. then oxygen 21%. तो कितना हो गया? 99. बाकी 8% में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, other gases. Okay, everything else together is 1%. And that other things also include vapor, right? Water vapor, it's very much there, right? तो vapor तो पहले भी था, अभी भी था. हमने इसको नहीं टच किया था तब भी था. जब टेबल पर रखा है ना, मैंने टच नहीं किया, या नीचे से टच ऐसे पकड़ा हुआ है. अभी भी वेपर है, सब कुछ है, अभी कुछ नहीं होता है. But when I put it my hands like this, then only it jumps. Yes, sir? Heat it, right? What I am doing is, my hands are somewhere around 37 degrees Celsius. The room temperature in the hall, what do you guess? 25, 30, 27, 28, like that. Okay? So when I touch
my hands are warmer than the bottle, and therefore heat flows from hand to the bottle. And I needed a bad quality bottle for this. बैड क्वालिटी का बहुत अच्छा क्वालिटी का जो फ्रिज में रखते हैं ना सुंदर सुंदर मोटा मोटा प्लास्टिक वाला दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट बी डन विद दैट तो फॉर अस वो पतला प्लास्टिक वाला कुछ से मुड़ जाएगा करके दैट विल बी द बेस्ट सो दैट heat which is going from the hand to the plastic also reaches the air inside. Okay? I'm not interested in heating the plastic. I'm interested in heating the air inside. So that plastic should not obstruct heat flowing. So one way is to have a better conductivity material, but then the other way is to reduce the thickness. If you reduce the thickness, तो उतना पतला सा क्या कर लेगा तेरा? वो heat क्या नहीं देगा? Okay? And if you go for better conductivity materials, you will end up in metal bottles, metallic bottles, copper bottles, good for health. Water kept in copper bottle is said to be good for health. But then they will not make a bottle of this kind of thickness. It will be much thicker than this. So total heat transmission will be obstructed there. So look for a poor quality plastic bottle. And then do this experiment. You can use this cap. You can also use some kind of a coin, put the coin here, and then do it. So heat goes in the air, the temperature increases of air. Then what happens? This cap was here, and then the temperature of this air was increased because my holding the surface here, right? अब क्या हुआ next step? Air expands, but air cannot expand because it is closed from all sides. It is closed from all sides, so the volume cannot increase, cannot decrease. The temperature is increased. I have given heat to the air, but it is closed from top, and of course it is closed from sides and bottom. The volume remains the same and temperature is increased. What will happen? Pressure will increase, right? Pressure will, if volume is fixed, then pressure is proportional to the temperature measured in Kelvin. PV equal to nRT. So if volume is fixed, then your pressure is directly proportional to the temperature, remaining the air remaining. Amount of air remaining the same, of course. So pressure increases. If pressure increases, what will happen to the bottom? The pressure of the air inside has increased. Bottom को क्या होगा? वो air bottom को क्या करेगा? पहले जो कर रहा था अब क्या करेगा? ज़्यादा press करेगा. That's the meaning of pressure increasing, right? इसको क्या करेगा? Wall को क्या करेगा? Will push it harder. Pressure increase करके आपने ज़्यादा force लगा रखा है. इसको क्या करेगा? ढक्कन को क्या करेगा? That air of more pressure now. Push it more. सबको प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है जो अगल बगल सामने इधर उधर जो आ जाए सबको ठोक दो, है ना? जो अभी भी ठोक रहा है और जोर जोर से ठोक दो, प्रेशर बढ़ा दिया. वो ठोकने से, ज्यादा ठोकने से इसका तो कुछ ना बिगड़ा, ये तो रिजिड हो गया है, अगल बगल सबसे जुड़ा हुआ है. बॉटम का तो कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा दबा भी दोगे तो कोई बात नहीं, दबा अच्छा है, गर्म निकल जाए. दबाने से गर्म निकलता है ना. लोग बोलते हैं ना पैर बहुत दुख रहा है, थोड़ा दबा दो उसको तो दर्द कम हो जाएगा. अच्छा, गला दुखे तो क्या करना चाहिए? उसको नहीं दबाना. लेकिन ये ढक्कन है ना, इट इज जस्ट प्लेस्ड हियर. इसको अगर जोर जोर से इधर से शुरू करके दबाना, then it can move up, right? जब ये मूव अप करेगा, what is the next step?
दिस इज एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप, थ्रेडबेयर एनालिसिस। मैंने होल्ड किया, मेरा हाथ गर्म था, बॉटल का सरफेस ठंडा था, लेस टेम्परेचर पे था, हीट फ्लो हुआ, फ्लो होकर के एयर में पहुंचा, एयर को हीट मिला, एयर का टेम्परेचर बढ़ा, एयर का टेम्परेचर बढ़ा तो एयर का प्रेशर बढ़ा। द स्टोरी गोज इन ए वेरी लॉजिकल मैनर, वो कैरेक्टरिस्टिक है। आप जब भी पढ़ाई करोगे या किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे तो गोज इन लॉजिकल मैनर, वो भेद टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर, उसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहानी नहीं बनाना, बिल्कुल लॉजिकल उसके चल। प्रेशर बढ़ने से फोर्स बढ़ा, तो कैप पे जो फोर्स लग रहा था पहले, which was not able to lift it, क्योंकि ऊपर से भी एयर का प्रेशर था, अंदर से भी एयर का प्रेशर था, प्लस इसका वेट था, सब मिला जुला के, प्लस यहाँ से जहाँ रखा हुआ है वहां से भी एक फोर्स ऊपर लग रहा है जिसके ऊपर रखा हुआ है, सब मिला के इट वाज एन इक्विलिब्रियम। Now one of the forces has increased upward, and therefore it goes up. Newton's second law. And when it goes up, अब क्या होगा? खुल गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये ढक्कन खुल गया, अंदर का प्रेशर हवा का ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ये क्या करेगी हवा? वॉल्यूम अंदर से बाहर निकलेगी। अगर एक ज्यादा प्रेशर में हवा है, बाहर में कम है, और हमने ढक्कन खोल दी, ज्यादा प्रेशर में से कम प्रेशर में जाएगा ना, साइकिल में हवा भरवाते हो तो क्या होता है वहां पे? तो पंप में ऐसा दबाव करते हो तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा देते हो, उधर का रहता है कम, वाल्व खुल जाता है तो रास्ता खुल जाता है, तो उसमें से पंप में से टायर में घुसता ना, ट्यूब में घुसता ना हवा, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाने का हवा का प्रकृति है। तो अंदर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर में कम प्रेशर है, जब तक ढक्कन पड़ा है तब तक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन्ड है, तो जाने का रास्ता नहीं, खुल गया तो जाएगा। अब जाने से क्या हो जाएगा? अंदर का प्रेशर वापस जितना बाहर था उतना अंदर हो जाएगा, जितना पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उतना ही फिर से हो गया। अगर नहीं हुआ तब तक जाता रहेगा, हो गया तो जाना बंद है, कुछ हवा निकल भी गई है बाहर, राइट? तो इसलिए अंदर से तो प्रेशर जो बढ़ा था वापस पुराना हो गया, तो वापस गिरेगा इसके ऊपर, ये उठेगा, उठने के बाद हवा निकलेगी, हवा निकल गई और तब ये वापस गिरेगा। तो जब वापस गिरेगा तो क्या करेगा? आवाज करेगा। उठते समय आवाज नहीं करता है, गिरते समय इसके ऊपर छक से मारता है ना, तो झट से आवाज करता है। ये आवाज आपने सुना, शायद आगे के लोग शायद सुन पाए होंगे, शांत रहेंगे तो शिक्षक करके सुनाई पड़ेगा। और आप पकड़े रहिए, आप पकड़े रहिए, फिर से गरम, राइट? फिर से गरम, द होल प्रोसेस विल रिपीट। तो इट नॉट ओनली वंस, उठेगा गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा। So depending on what is the room temperature and all that, you can do it 5, 6 times, 7 times, or you can just do 2 times, 3 times. तो ऐसा टक 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 टक। आपके घर में ऐसा कुछ होता है क्या? किचन में ऐसा कुछ होता है? तो हमने क्या ऐसा कुछ घर में किचन में होता है क्या? यस सर। प्रेशर कुकर में यही होता है, प्रेशर कुकर में यही होता है। आप अंदर का प्रेशर बढ़ाते हो, सब कुछ बंद है, ढक्कन ऊपर से रखा हुआ है, प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है तो उसके वेट को लिफ्ट करने लगता है तो ऊपर भागता है, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, सीटी बजती है। यहाँ सीटी नहीं बजी, अंदर से हवा बाहर निकल गई थी ना, वही काम यहाँ भी हुआ, वहाँ स्टीम निकल जाती है अंदर से बाहर और निकलते समय सीटी मारती है, क्योंकि बहुत पतले सा छेद होता है उसमें, पतले से छेद में से बहुत स्पीड से निकलती है हवा, क्योंकि वो सीटी मारती है। आप लोग सीटी मारते हो? पतला सा बनाते हो यहाँ पे, मारे रहे हो क्या बात, क्या बात, हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो हो गया। तो आप अपने मुंह को ऐसा करके पतला सा छेद बनाते हो, वहाँ से हवा निकलने के लिए 33 से हवा निकालते हो तो सीढ़ी बजती है।
प्रेशर कुकर में होता है, यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है, पर जो सेम फिनोमेना तो प्रेशर कुकर में होता है। ओके मैडम, 1:15 में मुझको कह दीजिएगा कि 1 घंटा हो गया, मेरे पास घड़ी नहीं। अच्छा, आप लोग नमक घोलते हो ना पानी में, चीनी नमक, तो एक काम करना, हमने नमक मंगाया नहीं, भूल गए, आप एक काम करना, एक गिलास में आधा 1 चम्मच नमक डाल देना। ला रहे हैं क्या? ला रहे, ठीक है, तो फिर ला रहे तो उसको पानी में बात करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, ओके, वेरी गुड। Can you see this arrow? Can you see this arrow? मैंने पेंसिल बनाया है, एरो दिखाई पड़ रहा है क्या? आपको दिखाई पड़ रहा है क्या ऊपर? नहीं दिखाई पड़ रहा है? ओके, यहाँ पर एरो है। ठीक है, कोई इनको ये बोलेंगे उसको सुनना और सोचना कि वैसा ही हो रहा है। तो which direction is arrow pointing? This way or that way? हाँ, देखो सबका हाथ तो दिखाई पड़ रहा है ना, सब लोग बोल रहा है इस तरह। Now, I put this arrow in front of this glass of water. Are you able to see which direction the arrow image pointing? Right? Alright? So if you look at the arrow here, that arrow is pointing towards right. For you people, आपके लिए बोल रहा हूँ। The arrow is pointing towards right. उसके सामने एक ग्लास का बोतल ले आओ, पानी भरा हुआ ग्लास ले आओ, तो आपको इमेज दिखाई देगा, and the image is pointing towards left. So what is it behaving like? What is it behaving like? Lens, and it is inverting the image. So वो जो इमेज बना रखा है, वो कैसा बना रखा है? रियल की वर्चुअल? रियल इन्वर्टेड दिख रहा है। रियल इमेज जो आगे पीछे आपको एरो दिख रहा है? एरो दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है? हाथ तक दिख रहा है। हाँ, अरे वाह, बहुत दूर तक दिख रहा है, आगे तक दिख रहा है। And when you look the arrow through this glass, are you able to see? इमेज दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है। ओके, आपका वो नीचे से ऐसे देखना पड़ रहा है ना। अब देखो शायद देखा, किधर है इमेज में एरो, किधर पॉइंट कर रहा है और इसमें कैसा पॉइंट कर रहा है? तो इट इज इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज है कि वर्चुअल? रियल है ना, रियल है ना। ओके, फिर से देखना, आपको इमेज किसी को दिखाई पड़ा क्या? किधर पॉइंट कर रहा है और अभी किधर पॉइंट कर रहा है? तो अभी भी राइट पॉइंट कर रहा है, और इसके सामने में ये ग्लास ले आया है तो भी राइट पॉइंट कर रहा है। पहले से उल्टा हो गया। देखो आप लोग, ये अभी पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, एंड देन आई पुट इट हियर। कैन यू सी द इमेज? किधर पॉइंट कर रहा है? राइट साइड। पहले भी राइट, अभी भी राइट। आपको दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? इधर है ना, उल्टा नहीं हुआ। What kind of image is this? Real or virtual? वर्चुअल सीधा इमेज दिख रहा है, ये वर्चुअल है, वो रियल था। कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप ऐसे नजदीक ला करके देखोगे तो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा दूर से, और दूर ले जाओगे और तब देखोगे तो आपको उल्टा, छोटा या बड़ा ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो उल्टा बनता है जब कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो रियल बनता है, यू कैन पुट द स्क्रीन। और सीधा जब दिखता है, आप देखोगे छोटे अक्षर लिखे होते हैं तो लोग एक लेंस बीच में लगा करके इसको बड़ा करके देखते हैं और वो सीधा दिखाई पड़ता है। दैट इज वर्चुअल, राइट? तो
तो आप कितना आसानी से आप रियल और वर्चुअल इमेज बना सकते हैं ना। और लोगों से सवाल भी पूछ सकते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है। मेरे पास एक दूरी था, छोड़ो ये मिल गया दूसरा। ये क्या है? मिरर। ये क्या है? दिखाई पड़ता है क्या है? क्यों से बोलना क्या है? मिरर है, प्लेन मिरर है, राइट? आपको तो अपना चेहरा दिखाई पड़ जाएगा, है ना? सुबह आए थे बादल बना करके, अभी तक तो इसके सामने कुछ रखते हैं जो आप देखे होंगे, लोग कोई गाड़ी के ऊपर, वैन के ऊपर ऐसा लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहता है बहुत कई बार, तो है ना? ऐसा क्यों लिखते हैं? लैटरल इन्वर्जन के बाद सीधा दिखे इसलिए करते हैं। लैटरल इन्वर्जन कहां पर होता है? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ये जो एम्बुलेंस आ रहा है पीछे से, तो किसके लिए कराया जा रहा है वो लैटरल इन्वर्जन? किसके देखने के लिए कराया जा रहा है? आगे वाले गाड़ी में जो बैठा है ड्राइवर, उसके पास जो मिरर है उसमें दिखेगा कि अच्छा पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस अच्छे से पढ़ा जा सके, सीधा पढ़ा जा सके। इसीलिए ना, इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं ना। तो मिरर क्या करता है? उसके पैरेलल में कुछ रखो तो मिरर क्या करता है? उसका डायरेक्शन बदल देता है ना, पक्का। मिरर के सामने अगर कोई चीज रखते हैं पैरेलल में, तो उसका डायरेक्शन पलट देता है। उल्टा लिखो तो सीधा दिखाई पड़ता है, और सीधा लिखोगे तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, पलट देता है ना। अब बताओ मैं, ये पेन है, इसमें एक काला कैप है और पीछे सफेद इसका बॉडी है, राइट? ये जो बॉल पेन है उसका जो ये कैप है काला, किधर पॉइंट कर रहा है? हाथ से बताओ, किधर पॉइंट कर रहा है ना? अब आप इसमें इमेज देखना, इस पेन का इमेज देखना, दिखता है क्या इमेज? काला वाला जो कैप है किधर पॉइंट कर रहा है? हाथ से बताओ। लैटरल इन्वर्जन का भाई जिधर एक्चुअल पॉइंट करता है, ये कैप किधर का? राइट की लेफ्ट? राइट। और इमेज में जो कैप था वो किधर का? राइट की लेफ्ट? तो राइट को तो राइट ही रहने दिया ना, और जो सफेद वाला है वो किधर पॉइंट कर रहा है अभी? हाथ से बताओ। और उसको इमेज देखो मिरर में, लेफ्ट है ना, तो इसमें तो कोई इन्वर्जन नहीं कर रहा भाई। आप घर में कर लेना, जो भी प्लेन मिरर होगा जिसमें आप कंघी पट्टी करते हैं, बिंदी टेकली लगाते हैं, टेकली समझते हैं? टेकली, अच्छा बिहार में टेकली कहते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, उसको बिहार में टेकली कहते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा लेकर के पॉइंटेड जिसमें देखो कि हाँ ये एंड ये है, ये एंड ये डिफरेंशिएट हो जाए, आप ऐसे देखो। तो जो आपके दीवार में मिरर लगा हुआ है, ऐसे करके देखो, आप पाओगे कि जो एक्चुअल बॉडी है उसमें जो लेफ्ट है, इमेज में वही लेफ्ट है। तो कहाँ लेफ्ट इन्वर्जन हुआ? मिरर तो करता ही नहीं, लैटरल इन्वर्जन क्या लगता है आपको? दिख रहा है? और बस माने तो हवाई जहाज में चढ़ा मिरर तो लेफ्ट को लेफ्ट रहने देता है, राइट को राइट रहने देता है। मिरर का तो कोई कसूर नहीं।
लेकिन उसको हमेशा बोला जाता है कि तुम ही हो जो लैटरल इन्वर्सन कराए हो। ओके, व्हाट वेंट रॉन्ग? This is true that ambulance which was written on the in the ink or paint on that arm was ulta, right? Anyone can see आजकल की उल्टा लिखा हुआ है। एंड देन जो सामने में जो ड्राइवर है आगे का गाड़ी में वो अपना मिरर में देखते हैं तो सीधा दिखाई देते हैं। तो ये उल्टा को सीधा किसने करा? उल्टा को सीधा किसने करा? मिरर तो करता नहीं, मिरर तो नहीं करता है। मिरर इज वेरी इनोसेंट। मिरर में तो कुछ ये मंशा नहीं है, डजंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग। देखो नमक आ गया है, I am putting some नमक in the glass, right? ये नमक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे लाके दिया गया है, क्या लाके दे दिया है मुझे क्या पता है। पर I assume कि मैंने इनको बोला था नमक लाने के लिए, तो नमक ही लाए होंगे और कुछ नहीं लाए होंगे। तो उसको मैं गिलास पे क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लेता हूँ। ये जो नमक होता है ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? पानी डालने से क्या होगा? सॉल्यूशन बनता है, राइट? तो मैं इसमें पानी डाल देता हूं, इसमें मैं पानी डाल देता हूं। आपको ऊपर से नमक दिखाई दे रहा है क्या? बॉटल में पड़ा हुआ नमक दिखाई दे रहा है क्या? बॉटल में पड़ा है ना? ऊपर देखने से बॉटल दिखाई पड़ रहा है। और तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? मिरर का लैटरल इन्वर्सन कर रहे हैं। So what inverted this wrong ambulance to right ambulance if the mirror does not do it? If the mirror does not do it, तो फिर किसने करा? स्टील का गिलास क्या कर रहा है? नहीं, स्टील का गिलास से निकाला कैसे? ओ नहीं निकाला है, यही करा। ओ इट इज राइट करो। Can you see what is written here? Yes, sir. क्या लिखा है? सीधा लिखा है, उल्टा लिखा है? Can you see what is written here? क्या लिखा है? सीधा लिखा है, उल्टा लिखा है? वो बोल रहे उल्टा लिखा है, ये बोल रहे सीधा लिखा है। इनको सीधा दिखाई पड़ रहा है ना, और आपको उल्टा दिखाई पड़ रहा है ना, तो लैटरल इन्वर्सन हो गया ना। इधर वाले को सीधा दिखता है, इधर वाले को उल्टा दिखता है, तो लैटरल इन्वर्सन हो गया कि नहीं हो गया? सीधा उल्टा किसने बनाया? इसने तो ये तो हिला ही नहीं, ये तो नहीं हिला ना, जैसा था वैसा, ये कुछ नहीं किया इसने। आपने उधर से देखा, बोला सीधा लिखा हुआ है, इन्होंने इधर से बोला बड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम इसमें है कि आप दोनों में है? जो लोग डायट पर आएगा उसको उल्टा दिखाई देगा, जो लोग ऑडियंस में बैठा होगा उसको सीधा दिखाई पड़ेगा। दोनों में क्या फर्क है? इधर बैठे इधर बैठे, पॉइंट ऑफ व्यू। जो इधर बैठे उधर बैठे, उसमें क्या फर्क है? These people are more intelligent, these people are less intelligent, और vice versa। ऐसे तो कुछ नहीं है। Anyone who comes and looks from this side will say that it is written in reverse way, and anyone on that side will say no, it is written in the straight way, normal way। तो ये नॉर्मल से रिवर्स करने के लिए किसी मिरर का जरूरत नहीं था।
किसी मिरर का जरूरत नहीं था. It depends on who is looking at from which side. It is looking. तो अब सोचो, ये है एम्बुलेंस. फर्स्ट करो ये है एम्बुलेंस. इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है. कौन बोलता है कि उनका लिखा हुआ है? वो खुद कहां खड़ा है? इसके सामने खड़ा है ना, और ऐसे खड़ा है. ऐसे वो खड़ा होकर पढ़ेगा ना, कैसे खड़ा होकर पढ़ेगा? ऐसे खड़ा होकर तो नहीं पढ़ेगा. एंड कैसे खड़ा है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सल. आप सबका मुंह इधर है तो आप बोलते हो सीधा है. आप सबका मुंह उल्टा है, इधर है, तो आप बोलते हो उल्टा लिखा है. तो देखने वाले का मुंह किधर है, दैट डिसाइड्स उल्टा लिखा है कि सीधा लिखा है. तो जो इसको पढ़ रहा है, एम्बुलेंस को जो एक्चुअल पेंट से जो लिखा हुआ है उसको जो पढ़ रहा है, वो कैसे खड़ा होगा? एम्बुलेंस के सामने ऐसे खड़ा होगा ना पढ़ने के लिए. और सामने वाले गाड़ी में जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, अपने मिरर में देख रहे हैं, जिनके लिए सब कहानी गढ़ी गई है, उसी के लिए बनाया ना. इट्स ऑल डन फॉर द ड्राइवर दैट ही शुड सी द एम्बुलेंस इन द राइट फैशन. उसका मुंह है इधर से एम्बुलेंस आ रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मुंह. वो बोल रहा है सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है. दिखेगा ही, तुम्हारा मुंह उधर है. और जो यहाँ खड़ा बोला नहीं भैया उल्टा लिखा हुआ है, उसको उल्टा दिखेगा. तुम्हारा मुंह उधर है तो तुम्हारा मुंह इधर है तो उल्टा दिखेगा, उधर है तो सीधा दिखेगा. मिरर का क्या कसूर है? व्हाट इज मिरर डूइंग? मिरर का तो कोई रोल नहीं है. Mirror is not doing any lateral inversion. You have already seen it. मिरर के सामने आप जो चीज जैसे रखते हो, जो लेफ्ट जो राइट जैसे रखते हो, इमेज ठीक वैसे ही बनता है. सामने सामने बनना है ना इमेज. इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा. वेरी गुड. केस ऑफ इन्वर्शन, एनी काइंड ऑफ इन्वर्शन. तो आज से मिरर को इस श्राप से मुक्ति दे. उसको वो एक बार किसी को चुप गया था, कोई तेज को, कोई ऋषि मुनि को पता कर रहा था, ये शीशा उसको चुप गया. तो ऋषि मुनि बहुत गुस्सा हो गया और उसको श्राप दे दिया. तुम पर हमेशा लेटरल इन्वर्सन का इल्जाम लगे रहेगा. तो उसके बाद वो जब बहुत हाथ पैर जोड़ा करे नहीं 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 नहीं, तो बोला अच्छा वो कलयुग में 2023 के साल में एक शिव वर्मा नाम का वो तुमको श्राप से मुक्ति दिलाएगा. ठीक है ना? तो मिरर कार्ड श्राप से मुक्ति दिलाएगा. मिरर कुछ नहीं करता है, कोई इन्वर्सन नहीं करता. आपको नमक दिख रहा है क्या? देखो यहाँ देखो, सफेद सफेद नहीं है जैसा पहले नजर आ रहा था. दिख रहा है क्या? और it was soluble, it should have been dissolved. It should have been dissolved. मैंने बहुत ज्यादा तो डाला नहीं था कि कंसंट्रेट साथ में थोड़ा सा डाला था. डिसॉल्व हुआ नहीं डिस्कॉर्ड. कितना देर हो गया? बहुत देर हो गया. It is not dissolved in water, so it's not soluble in water as such, right? No, it's soluble. It is soluble. It is soluble, but it is not dissolved. Okay? It is soluble, but it is not dissolved in water. पड़ा हुआ है. वो solution बन नहीं रहा है. वैसे ही पड़ा है. और आगे बढ़ते देखते हैं उतना देर में शायद वो भूल जाएगा. Solution बन जाएगा. All right. यहाँ बार बार इसको डोरी याद आता है. हाँ मिला ना डोरी. ये जो कोई डोरी है, ये डोरी को में हम लोग बांध देते हैं. और आप 2 बॉटल लाके मेरे को दिए थे यहाँ पे. हाँ गुड. एक में पानी भर दीजिए. दोनों में ढक्कन है ना? नहीं है. एक ढक्कन वाला देखो.
दोनों दो इन दोनों में एक में पानी भरो। वो भरा ही हुआ, वो भरा ही खोलना नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं, पानी मत खोलो, इसको जरा यहाँ बांध के मैं लटकाऊंगा, गिरना नहीं है, अच्छे से टाइट। दूसरे एंड पर दूसरा वाला ट्राई करते हैं जो खाली है, ऐसा ही करते हैं। दो बोतल एक जैसा है, एक में पानी भरा हुआ है और दूसरे में पानी नहीं भरा है, तो दूसरा वाला क्या है? खाली है। कोई चीज खाली रहता है क्या कभी? क्या रहता है उसमें? एयर रहता है। हाँ, दूसरे बोतल में हवा, एक बोतल में पानी है और दूसरे बोतल में हवा है। कौन भारी है? पानी वाला भारी है। अब इसको इस पेन के ऊपर हम लटकाएंगे ऐसा, छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये गिरेगा फटाक से, ऑलराइट, कितना चाहिए? अब इसको मैं दो चार लपेटन दे देता हूँ यहाँ। अब क्या हो रहा है? एक हल्का वाला बॉटल, एक बिना पानी वाला बॉटल, एक पूरा भरा हुआ बॉटल को बैलेंस किए हुए। कितना हल्का बॉटल है वो, इतना भारी बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ है, बैलेंस किए हुए है। तो भारी वक्त अब क्यों नहीं गिर रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। और अभी जब इसको कम लपेटन दिए थे तो देखो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो अभी क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया। और जब ज्यादा लपेटन दे देते हैं, मोर टर्न्स, इस पे मोर राउंड्स लगा देते हैं डोरी का, देन फ्रिक्शन बढ़ जाता है। So that means friction depends on the area of contact. मैंने ज्यादा लपेटन देके क्या किया? I increase the area of contact. So if the area of contact is less, the friction is less, the heavier one falls. And if there are more number of turns, if the area of contact is increased, the friction is increased, the heavier one does not fall. So that means the area, the frictional force depends on the area of contact. लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? It does not depend. लेकिन it depends, देखो, it depends. है? तो कुछ प्रॉब्लम है ना? तो टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय में you should be very very critical, not careful, very very critical. ऐसा नहीं सोचना कि टेक्स्ट बुक में लिखा है, ओके, cannot be questioned, cannot be debated. टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उस पर भी डिबेट हो सकता है और होना चाहिए। और वो डिबेट का मोशन का नोटिस कौन देगा? डिबेट होना है इसके ऊपर, होता है ना, पार्लियामेंट में कोई नोटिस देता है इस पर डिबेट होना है, हम लोग देंगे ना, जो रीडर है वही तो देगा। अफेक्टेड कौन होता है? टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है उससे अफेक्टेड कौन होता है? विक्टिम कौन होता है? तो जो विक्टिम होगा वही तो कोर्ट में जाएगा ना, वो बहस करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो किताब में जो लिखा है ना, उसको क्रिटिकली देखना, कहां कहां तुमको वो विक्टिम बना रहा है। हाँ? उसके बाद फिर बहस करना, डिबेट करना, ओके। ये देखना, ये आप लोग देखना, आपको तो दिखाई पड़ने वाला है नहीं। ये क्या है? इसमें हमने क्या किया और उसमें क्या डाला? पानी डाला ना, इसमें पानी है ना। तो देखो इसको पुल करेंगे और क्या होगा?
आप देखना और देख के सबको बताना कि क्या हुआ। गरम हो जाएगा। राइट में टाइम और ये जोर से बोलना फिक्स से सुनाई पड़ेगा। आपको पर ध्यान में What did you see? और कुछ दिखा क्या? बबल्स दिखा ना? अच्छा, फिर तो दिखाते हैं यार। फिर तो देखो ध्यान। Bubbles are there? I have put little amount of water here in this syringe. इसमें थोड़ा पानी देखिए आपको निकलता है वो दिखेगा शायद। ये देखो आप निकला निकला थोड़ा सा पानी हमने इसमें लिया और थोड़ा सा पानी ले करके और हम इसको क्या कर रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं। ऑलराइट, तो पुल करने से क्या होता है वो आप देखना। ज्यादा दूर नहीं होता है, ठीक है ना? बहुत सारा है आओगे दूर करके ये लोग कहीं नजदीक चले जाएंगे। This is air entering from outside and showing it as bubble. Possible है जब मैं इसको पुल करता हूँ when I pull it, lot of bubbles come. Are these bubbles air bubbles which are leaking from outside? देखो जब छोड़ दिया तो वहीं तक पानी वापस पहुंच गया है जहाँ तक। तो air is not coming from outside. Where are these bubbles coming and what these bubbles are? Air कहाँ से आया? अगर एयर आया बाहर कहीं से घुस गया एयर तो जब छोड़ दिया तो यहाँ एयर दिखना चाहिए था ना ऊपर में, है जितना पानी पहले था जहाँ तक उतना पानी some gaseous particle is coming up and it is not air. What it is? What it can be? Water vapor. बबल्स बन के बाहर निकल रहा है। तो जब पानी है और बबल्स बन करके वो स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, इट इज वाटर वेपर, इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। बबल्स करके निकल रहा है पूरा में से। व्हाट इज इट कॉल्ड? फिनोमेना तो क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। बॉइलिंग व्हाट इज इवापोरेशन? Here also water changes from the liquid state to, but then you don't see bubbles. Evaporation can take place at any temperature. Liquid can be converted into vapor at any temperature. ये अभी इन्होंने देखो पोछा लगा दिया था ना यहाँ पे लेकर के, और अभी उस समय जब पोछा लगा दिया था तो सारा पानी खत्म तो नहीं किया था, एक लेयर बना हुआ था ना, कहाँ चला गया? इवापोरेशन होता है, बबल नहीं बना। मैं एक से पानी रख दूंगा उड़ जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, बबल्स नहीं बनेगा। अगर बबल्स बन करके वो पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है, देन इट इज बॉइलिंग, स्टीम बन रहा है, पूरा में स्टीम बन रहा है, पूरा मास में स्टीम बन रहा है। सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव बॉइल्ड द वाटर। मैंने बॉइल किया है इसको। I have taken it above the boiling temperature. Boiling temperature पहुंचेगा तभी तो बॉईल करेगा ना। तो मैं इसको खींच के क्या करता हूँ? I am taking this water to its boiling point. How much is the boiling point of water? So आप क्या सोचते हो कि इसका जो पानी है वो 100 डिग्री पहुंचा दिया था मैंने? हाँ? ये देखो 100 डिग्री पहुंचा दिया, बॉईल कर रहा है, और ये देखो पानी हम अपने हाथ पे डाल रहे हैं।
से पानी हमने लिया था वो ऑलमोस्ट वहीं पर है. I can very comfortably put that water on my hand. But boil तो कराया है मैंने. So I must have taken it to the boiling point of water. नहीं. So that the मैंने उसको टेम्परेचर रेज नहीं किया है. बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री होता है वहां तक मैंने टेम्परेचर रेज नहीं किया है. अगर किया होता तो हम अपने हाथ में नहीं डाल सकते थे ना, जल जाता. तो मैंने क्या किया है, बॉइलिंग पॉइंट को नीचे लाया. मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, आप तो मेरे तक पहुंच सकते हो. बॉइलिंग पॉइंट को मैं नीचे लाया हूं. मेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 से बदल के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है और इसको बॉइल करा दिया हमने. ओके, बॉइल हो रहा है, प्रॉपर बॉइल हो रहा है. एयर नहीं है उसमें, एयर एंटर नहीं कर रहा है. बबल्स तो देख रहे हो, पानी का बबल है, स्टीम का बबल है. पानी का बबल नहीं बनता है, पानी के ड्रॉप्स बनते हैं, पानी के बबल्स नहीं बनते. लेकिन यहाँ पे आपको बबल दिखाई पड़ रहा है पानी के अंदर में. So that and coming up, so it's proper boiling. It's steam which is being produced, and the boiling is being done at the room temperature, whatever it is, 27, 28, 30 जितना भी है उतने ही हो रहा है. अब इसका boiling point कितना है पानी का? 30 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है. Okay, and that is because pulling it, what I am doing by pulling, I am decreasing the pressure above the water. और पानी के ऊपर जब प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, घटता है. That is why we say कि पहाड़ों पर दाल नहीं गलती है. बोलते हैं ना, पहाड़ों पर दाल नहीं गलती. आजकल पहाड़ों पर दाल गल जाती है. पहाड़ों पर दाल क्यों नहीं गलती थी? हम जब बच्चे थे तो हमारे टेक्स्ट बुक में हमेशा लिखा रहता था पहाड़ों पर दाल क्यों नहीं गलती है. कहां से समझ गया था? तो हम कहते थे पहाड़ों पे एयर का प्रेशर कम होता है. And that is why the boiling point is less than 100 degrees Celsius, and so the water is not enough hot to send lot of heat to your grains, दाल में जाने के लिए, and therefore it takes more time to be cooked. अब ऐसा बात नहीं है. Now it is pressure cooker. Outside pressure may be low, लेकिन अंदर जो steam बन रहा है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे, उसका कैप लगा हुआ है. The pressure still becomes very high and the boiling temperature goes up, और खाना उतना ही देर में बनता है जितना प्लेट में बनता है. उतने ही घर में पहाड़ कभी बनता है. So that we are doing here. नमक दिखाई दे रहा है क्या? Yes. नमक दिख रहा है क्या? Yes. वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है. डिजॉल्व करने के लिए क्या करें? टैन करें. चम्मच की भूमिका है. We need a चम्मच. We need a चम्मच की डिजॉल्व. अब बोलो दिखाई पड़ रहा है क्या? बहुत कम. और जो दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? पहले तो पूरे में फैला हुआ था ना मॉडल में, अभी कहाँ पर है? एक जगह आके ना सेंटर के पास आ गया. देखा? जो सेंटर के पास था वो डिसॉल्व नहीं हुआ, और जो सेंटर से बाहर था वो डिसॉल्व हो गया. दो तरह का नमक लाया क्या भैया? और डालते समय वो कैसा डाला मैंने? एक वैरायटी का एक जगह गिराया, दूसरा वैरायटी का फैला दिया. तो पहला वैरायटी तो घुला नहीं, वो तो वहीं रह गया, अभी भी रह गया. अब तो क्या मैंने घोल दिया उसको ढाक रख करके, और दूसरा वाला वैरायटी तो चम्मच के लाने से घुल गया. तो ये क्यों हुआ? बीच वाला घुला, साइड वाला क्यों घुला?
जब आप रोटेट करते हो ना, ऐसा रोटेट करते हैं, तो जो सेंटर है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, वहां के पार्टिकल्स के वेलोसिटी कम होती है और दूर वाला रोटर का वेलोसिटी ज्यादा होता है। इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये जो है इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा और यहाँ वाले का वेलोसिटी बहुत कम होगा। उतना ही टाइम में इसको भी एक चक्कर पूरा करना है, उतना ही टाइम में इसको भी एक चक्कर पूरा करना है। तो इसको इतना सारा डिस्टेंस करना है, इसको इतना सारा डिस्टेंस करना है एक ही टाइम में। In one rotation, this fellow has to go 2 pi into this radius, and this fellow has to go 2 pi into only this much radius. तो बाहर वाला तेज घूमता है, भीतर वाला धीरे-धीरे घूमता है। That is why टैग करने से बाहर वाला तेज घूम गया तो डिसॉल्व हो गया। जो बीच वाला था वो धीरे-धीरे घुमा तो डिसॉल्व नहीं हुआ। ना डिसॉल्व करने में ये घुमाने का क्यों जरूरत है? Why do we need to stand? उसको start, why should we do it? What is the role of standing in dissolving salt in water? उसका क्या है? ये तो बताया नहीं केमिस्ट्री वालों ने हमको बोला कि ये insoluble है, ये soluble है। लेकिन soluble को भी dissolve करने के लिए चम्मच भी चाहिए होता है, ये तो नहीं बताया। तो चम्मच का रोल भी नहीं बताया कि चम्मच करता क्या है। पानी में तो रख दिया मैंने, डुबा दिया पानी में, अब कितना उसको एंटर करने के लिए no, it is that the salt particles have to go into the intermolecular space। तो मैं तो उसको पूरा पानी में अंदर तक डुबा दिया, जाओ कहाँ जाना है। But yes, very good. Rotating. By standing, you are taking those salt particles to many other places also. तो जहाँ वो पड़ा था, वहाँ जितना intermolecular spaces था, वो भर गया। And then there are no more intermolecular spaces. और ऊपर का जो पानी है उसमें बहुत सारा molecular space अभी भी बचा हुआ है, because the salt has not reached there. So by standing, you are taking the salt particles to all the parts of the water, यहाँ वहाँ सब जगह उसका लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे खाली है तो उसमें घुस गया, यहाँ वाले भटकिया था तो नहीं घुस रहा था, तो बड़ा था, right? Good thing. Good. See, the salt जहाँ रखा रहेगा, उसके कांटेक्ट में जो पानी का लेयर है, उसमें तो पहले घुलेगा ना। जो कांटेक्ट है उसी में घुलता है ना, जिसमें कांटेक्ट ही नहीं है, 5 सेंटीमीटर ऊपर पानी पड़ा है, तो नमक को क्या पता है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर है कि नहीं है? तो उसके इमीडिएट कांटेक्ट में होगा, ओनली इन दैट इट विल डिसॉल्व, एंड दैट लेयर इज वेरी थिन। The layer of water which is adjacent to the salt, solid salt, is very thin. तो सैचुरेट हो जाता है पानी में। थोड़ा सा पानी में बहुत सारा नमक डालो तो क्या? That water will saturate, the remaining will stay solid. So जब मैंने नमक डाल दिए हैं, पानी डाल दिए हैं, नीचे का जो नमक है उसके ऊपर का जो पानी का लेयर था, उसमें वो नमक घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है। That layer of water has become saturated. So it cannot take any more salt. And since the layer in which the salt has been dissolved has become dense, density increase हो गया है, right? Normal water का density, and then you dissolve some salt in it, उसका density, which one will be larger? Salt वाला, because you have put more mass in that, volume तो बदलता नहीं है खास। Now since it is dense and this is light, it just floats over it. Dense के ऊपर लाइटर को फ्लोट करना होता है ना, एक पानी में आप रबर का बॉल डाल देते हो तो ऊपर आता है, नीचे नहीं आता। So this water in the tumbler above, वो नमक जहाँ है उसका 1 मिलीमीटर छोड़, उसके ऊपर का जो पानी है उस 1 मिलीमीटर के ऊपर फ्लोट करे,
because that 1 millimeter is denser and this is lighter. It does not allow it. That normal water is not able to go there and hit उसको नमक तक पहुंचता नहीं है. You have intermolecular forces, kinetic energy है आपका molecules में, उससे जाना चाहिए था. But because of the density difference, it is just remaining out. So you have to break that saturated layer. वहाँ से saturated layer पकड़ाओ और पानी डालने दो वहाँ पे, then it will dissolve. Okay, so I think I have consumed more 1 hour. तो आपको ये सब सुन करके हमारा अरे ज़्यादा कर दिया ज़्यादा टाइम ऑलरेडी 1:30. तो कैसे लग रहा है ये शो? मैंने कुछ पढ़ाया क्या? इसको सोच के बोले यस सर, लेकिन इंस्टेंटेनियस पहला रिप्लाई आया था नो सर. तो मैं पढ़ाया हूँ आपको बहुत सारा चीज, पढ़ाया हूँ बहुत सारा चीज पढ़ाया हूँ आपको, बट आपको पता नहीं चला कि मैंने पढ़ा क्या. Okay, so if you relate what you study in the books, if you relate to what is seen in your house, घर में, स्कूल में, खेल का मैदान में, जो आपको दिखाई पड़ता है रोड पे, जो आपको दिखाई पड़ता है, you can relate those principles which you are studying in the book to those phenomena. In the books, there are some very ideal type of phenomena which are described. But in everywhere, ये बोतल, ये गिलास, ये syringe, ये नमक, ये पानी, हमारा रोज का काम है, रोज का काम है. उससे जब हम relate कर पाएंगे अपने principles को, then our expertise will be much. Okay? So keep thinking. Don't believe what is written. Don't believe what elders say. Risky statement. Risky statement. बड़े लोग जो कहते हैं वो बात मान लेना चाहिए. ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है. बड़े लोगों का आदर करना, बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करना, जो बोले उससे बहस नहीं करना, बड़े लोगों से बहस नहीं करना, ये हमारे हिंदुस्तान में कल्चर. लेकिन वो कल्चर थोड़ी देर के लिए भूल जाना. जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, किसी से भी बहस करो, किसी का भी बात करना ना, ये ठीक है, मेरे को समझा दो पहले, कभी मारने कैसे नहीं मारने. तो दैट थॉट प्रोसेस अगर आप अपना ठीक कर दोगे ना, यू कैन थिंक, आप फिजिकली थिंक कर सकते हो, एंड यू कैन डिबेट, यू कैन चैलेंज. तो बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये वाला तो हमने सोचा ही करोगे. चैलेंज पिटीशन डाल दो, रिजेक्ट होता है तो होता है, लेकिन पिटीशन डाल दो, बहस होता है. इसको हम लोग कहते हैं शास्त्रार्थ. बहस कर कहते हैं, फिर इससे बहस करो, बहस करते हैं हमसे, मुझसे बहस करते. Then the meaning is you should not do that. It's bad manners. But शास्त्रार्थ कर रहे हो, that's not bad. वो हमारे कल्चर में शुरू चला हो. And anyone can challenge. Anyone can challenge anyone. वो शंकराचार्य को कितना बड़ा नाम है, उसको किसने चैलेंज कर दिया था? गार्गी ने. Anyone can challenge anyone. ठीक नहीं हमें लग रहा है तुम्हारा बात, आओ शास्त्रार्थ करते करते अब जवाब दो हमारा, मैं जवाब देता हूँ आपका. That process should go on. That is how you will be in power. That is how you will be. Okay. Thank you very much.